हाँ जी, अब शुरू हुई। नमस्ते अंकल, सत श्री अकाल, जय गुरु जी। आपको बहुत बहुत वार्म वेलकम यहाँ की संगत से। Jai Guruji. I met Guruji in 1996 when I retired from the army. At that time, I had a lot of problems, health-wise, finance-wise, and other small problems. My children had not settled yet, not married. And when I retired, I was making a house in Panchkula. ते मैं अरदास की थी, मेरे मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा. My son had lost his hearing when he was 3 years old. 3 दिन ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਗੁਰਜੀ ਤੋਂ that he wants to meet me. I had never heard about him, never met him, but I got the message from him that he wants to meet me. After 4-5 days, I was called where Guruji was given a reception in the Chandigarh Golf Club. I also met him. When I looked at him, a very handsome person, beautifully dressed up, कोई मत्थे दे ऊपर तिल नहीं सीगी, कोई माला नहीं सीगी. At first I thought that he's a model, very handsome. पर जिस तरह मैं गुरुजी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਰ. I was attracted to him like a magnet. My house was in sector 4 Panchkula. Guruji was staying in sector 2 Panchkula with Jan Ahuja. ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. He appeared as a stranger to me for 10 days. 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ. And there were 5-6 other couples also sitting in the bedroom. ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 40 ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾੜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ. She says yes, because she used to keep those sarees packed in tissue paper. That's how she remembered the exact fact. तेरे कोले इन्ना थोड़ा सोना भी है. गुरुजी मेरे को सोना बहुत है, पर पत्थर जोड़े हुए हैं, कोई डायमंड है, कोई रूबी है. So I really can't tell you the exact amount, the gold that I have. ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ, ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਖਿੱਚਿਆ. This is the total amount of what he got. फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ when we went outside, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ, there was a chit lying in my wife's cupboard mentioning the entire amount what Guruji had mentioned. ਉਹ ਚਿੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ W&B. ਕਹਿੰਦੀ ਆ W ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ this is the amount which I got in white. ਆ B ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ that's beautiful. Naturally, you don't pay a tax for this, the beautiful yogi. And for the first time throughout our life, you were always faithful to me. On the eve of your to retire, ho gaya to jhoot bolan lag gaya. I said jhoot ko nahi bolan lag gaya. मैं कहा तुसी ladies दी आदत हैगी. For them, diamonds are forever. मैं कितने investment करनी सी, तुसी कितने investment करोगे? So you know the whole business will go for 6. Anyway. ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ. ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ
फिर तू किथे गया? मैं कहा जी हकीम, allopathy, at the allopathy, all systems of medicines were tried. Nobody was able to cure him. तू होर किते भी गया है? मैं चुप रहा जी। तू होर किते भी गया है? मैं चुप रहा जी। कहंदे दस। मैं कहा गुरु जी मैं तो भूत प्रेता कोले भी गया। वो की कहंदे तैनू? मैं कहा गुरु जी वो कहंदे ठीक हो जा, पर बेटा ठीक नहीं होया। तैनू झूठ बोलते रहे। मैं कहा हाँ झूठ ही बोलिया। ऐ कर ਹੁਣ ਕਾਕੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਲਿਆਣ 20%। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਦਾਮ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੂਲਿਨ ਆਇਲ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਬੇਲ ਆਇਲ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ 10 ਦਿਨ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਪਾਇਆ ਤੇ 10 midnight he gets up and tells me I'm getting a terrible earache in both ears. He had been an expert in lip reading also. मैं क्या गुरु जी तक कहते सी कल्याण hearing ठीक हो जानी, इतने तो उल्टा काम हो गया। Next day when I went to the hospital, डॉक्टर मेरे को सुन लगे तो कहना तू कैसा है, एजुकेटेड आदमी है, तू तेल पाया, तेन पता तेल इन्फेक्शन लियाएगी कान दे विच, कान होर खराब होएगा। मैं कहा जी डॉक्टर साहब होर की खराब होना है, सुनता तो है नहीं, उन्हें इन्फेक्शन की कर दूंगी। कहता आई विल क्लीन हिज एयर, उन्हें कान कुन साफ किए। ते कहते ऑन ट्यूसडे इज माई ऑडोमेट्री टेस्ट, तू अपनी ऑडोमेट्री टेस्ट करी। He did his odometry test, छोटा जा कमरा स्टूल ते बैठा, लैपटॉप ते मंगो बटन जैसी के कान दे विच फ्रीक्वेंसी पाई, नॉइज दी which you and me cannot hear outside, but he heard it. वो गिर गया। I thought that he had slipped by mistake. Again he got up and sat on the stool. फिर वो गिर गया। मैं कहा what happened? कहता पापा the noise was very loud, मैनू चक्कर आ गया। He heard this loud noise after 25 years, a quarter of a century. I didn't believe it myself. जिस तरह मैं बाहर आया, कार दे जो भी बैठा, मैं भी बैठा, and we reached the house. He got it from the car first, and I got a little later. When he was at a distance of approximately on the driveway, approximately a distance of 15 feet, he again got my pictures. I called out his name. He looked back and said, yes, Papa. That was a confirmation to me that I have not been hypnotized by Guruji. He has got his 20% hearing back. ये कौन कर सकता हैगा? ये रब भी कर सकता है। And Guru Granth Sahib लिखा हैगा, God is Guru and Guru is God. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ उसी दिन मैं गुरु जी कोले गया। मैंने दूरों देख के ही gives me a smile. कहते हाँ ठीक हो गया? मैं कहा हाँ जी गुरु जी थोड़ी कृपा नाल। कहता देखिया अज मैं तेनों रब दिखाया। मैं कहा गुरु जी मेरे वास्ते तुसी हो रब, क्यों गुरु ग्रंथ साफ कहता है गॉड इज गुरु एंड गुरु इज गॉड। हुण टुट के भक्ति विच पै जा। समझे मेरी गल? मैं क्या गुरु जी समझ गया। Now, you know, I used to hear so many satsangs that brought me a confidence, that created a faith in me, a faith in my Guru. Because जब तक थोनू faith नहीं हुंदा, जिन्ना मर्जी कहानियां सुन लो, आगे काम हुंदा ही नहीं। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਾਂ, the officers here told me that every year you're going to your Guru, spend the new year with us.
I said, मैं सोचदा है मैं वाइफ नाल भी गल कीती कहंदी हाँ this year we spend the new year with our friends ते न्यू ईयर दे बाद ਆਪਾਂ ਗੁਰਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ मैं भी बड़ा खुश होया मैं किन्ने सार विस्की मुस्की ते पीती न्यू ईयर दे जो है विस्की कबाब डांस डूंस करांगे ढोल बजणगे and you will feel wish at midnight a happy new year उसी दिन सवेर ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ my wife makes me a cup of tea every morning she made a cup of tea किचन च गई गर्म पानी कीता ਵਿੱਚ teaspoon ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਈ when she looked at the concave side of the tea spoon she ਜਿਹੜਾ tea ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪਤੀਲੇ ਚ ਪੈ ਗਈ and ਜਿਹੜਾ dust ਸੀਗਾ it gave the shape of a cobra snake in the concave position of the teaspoon ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚਮਚ ਪੀਤਾ teaspoon ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ then she came to me मैं आ देख मैं कहा झूठ के क्यों तू है जियां गल्लां च पई होईयां सवेरे सवेरे I came up and took a tablespoon this time which is much bigger मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਮਾਰੀ और पतीले देख सिटी and the powder again gave the image of a very distinct nag Gurji is a bhagat of Lord Shiv और शिव दे गले विच नाग ਹੁੰਦਾ मैं एक दिन वाइफ ਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं कहा this is a message from Guruji that he does not want us to be here he want us to celebrate the new year with him in Delhi ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ where all the people had assembled everybody was dancing except me and my wife ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਹੈਗਾ for the last so many years ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ again Guru ji told her to dance we never got it then he gave a very sort of a dirty look and said dance मैं तो मेरी wife dancing floor पे आ गए शब्द कीर्तन was on bunting गुब्बारे गुब्बारे लगे हुए everybody was dancing feeling very happy so did we also started dancing रात दे 12 बजे lights went off after half a minute or so the lights came on balloon फटन लगे and guess this my wife's backache for this last so many years it vanished ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ I gave a ceremonial burial to the painkillers the profane in my garden ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ never used to say ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ it was just one of those his way of method was such ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗੁਪਤ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ he is treating Guru ji treating the patients but the patient never knew about it this was my wife's side ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ a friend of mine ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਲਿਆ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੇ ਬਹੁਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ so I made an attempt ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੁਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ so ਜਦ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ I used to look for them ਕਿ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ the eyes were moving about and one day Guru ji gave me very dirty look ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ how could I tell Guru ji ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ have they come or not then ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ my ਕੋਈ ਰੋਮੀ ਸ਼ੋਮੀ ਆਇਜ਼ ਨਹੀਂ I started concentrating on the shabd and kirtan felt so nice felt so contented and that is the day my journey in spiritualism started for the benefit of me and the family ਇੱਕ ਫਿਰ ਦਿਨ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ a friend of mine ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਸ ਭੇਜਣੇ ਆ
in Russia during the winters, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, I would like to grow the roses there. ਮੈਂ ਕਿਹਾ you're most welcome. ਕਹਿੰਦੇ before that I would like to test the soil. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਸ਼ ਬੈਠ ਚੱਲ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ what is this? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ। ਕਹਿੰਦਾ what nonsense। ਲਗਾ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ, ਮੈਂ ਮੈਡੋਨਾ ਮੋਡੋਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ, we were serving all the time, yes sir, yes sir, you know, listening to the boss all the time, whether right or wrong. Now we are independent, let's make the most of it what we lost in the army. मैं कहा यार मैं तो शब्द कीर्तन नहीं होना है, this is my way of my life, I've changed completely. कहना मैं फिर गुरुजी सत्संग करना गया, कहना I don't believe in gods and gurus, सब झूठ बोलते हैं, सारे पखंडी है। कहते जब तक मैं मेरे अपने अखा नाल नहीं देखता, I won't believe in your guru at all. जिस तरह मैं सत्संग कर रहा सीगा, शॉर्ट ऑफ करनाल एक ट्रक आया पिछों, hit my car from the backside. The weather was fine and I was going very slowly. मेरी कार tumbled over the divider badly. चंगी तरह कार तब खत्म ही होगी, ਅਸੀਂ ਵੀ गंदे बेहोश हो गए। In the meantime, people came, pulled me, my car. ਅਸੀਂ दोनों बेहोश पे सी, ਸਾਡੇ पर पानी पूनी पाया। I came to my senses first. मैं दोस्त वाले देखे लंबा बैठ के यार, मैं कहा ये तो हवा ही था। Anyway, after some time he got up. Believe it, मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी, ओदी कोई हड्डी नहीं टूटी। We looked at each other, कहंदा today I believe that your guru is God, because the way this accident happened, we would have been both dead and gone. And but here we are awake, कोई सट नहीं लगी, कोई today I believe that your guru is God. Anyway, ਅਸੀਂ रात में रेस्ट हाउस रहे, car was broken and पुलिस वाले भी आ गए, सब कुछ आ गए। You know, well stage managed. I didn't have to go here and अपने आप ही होते, पुलिस वाले आ गए, अपने आप ही होते, कई witnesses आ गए, so that my insurance claim could be, I mean, it was all stage managed by Guru. 7th जुलाई ਨੂੰ फिर मैं गुरु जी को गया, कहते फिर बच गया हैगा। मैं क्या, हाँ, तेरी कार करनाल को इत्थे सीगी? मैं कहा हाँ जी। तेरे नाल तेरा दोस्त भी सीगा? उन्होंने यकीन आ गया कि रब हैगा? मैं कहा हाँ जी। उन्हें आ कपड़े पाए हुए सी ते तू आ कपड़े पाए हुए सी? मैं कहा हाँ। तेरा आ शब्द कीर्तन चल रहा सीगा? मैं कहा हाँ जी, यही शब्द कीर्तन चल रहा सीगा, मैं सुन रहा सीगा, मैं तेरा एक्सीडेंट देख रहा सीगा। Good enough. The fact that he told me each and everything about me, it means he was listening to us. फिर उन्होंने गुरु के old man गुरु जी को लाऊंगा। मैं कही गुरु जी was listening to, seeing us, listening to ये हो रहा है, शब्द कीर्तन चल रहा है, that means he very well knew accident होने वाला। Why didn't he save us? You know what the old man tells me? आने वाले दिन तेरे नाल कोई बुरी घटना होनी सीगी, ओ गुरु जी ने आ तेनू ए तेरी सट लगा के, I mean ए तेरे एक्सीडेंट करके ओ आने वाली दुर्घटना सीगी, ओ तेरी बचा। See how Guru looks after his sangat. And I would say कि जदों भी थोड़े नाल कोई प्रॉब्लम्स आंदा हैगा, you must say तेरा पाना मीठा लगे, your will is sweet, because in that will something good has happened to you. ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ I feel so angry कि ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ criticize करदा हैगा, मेरे चुगलियां करदा हैगा, and I tell them जिस दिन तेरी चुगली हुंदी हैगी,
you should be thank you to Guru and God. वो कहंदी किस तरह? मैं कि if somebody says something against me, right, और मेरी चुगली करे, ते ओदी थोड़ी जी भक्ति ओदे स्पिरिचुअल बैंक तो खत्म हो जाती है और मेरी स्पिरिचुअल बैंक आ जाती है. With the result, I have, this is called passive bhakti, without effort. ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟੜ ਗਈ. Have you understood this? ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਘਟ ਗਈ and something can happen to him. So you see, is the question of give and take in bhakti also. So remember, the day somebody does not criticize you during the month, थोड़ी चुगली नहीं कीती, it is a loss to you. It is a loss to you spiritual wise. Okay, you got the point. As a matter of fact, there are 5 evils you have to be careful about: anger, ego, pride, lust, and greed. The fact that you feel happy कि आज मेरे ने किसी ने चुगली की थी, you should feel happy, contentment. With the result, your anger, ego, pride has been destroyed. You understand? I have learned this all from Gurujis Shabad, Kirtan, and meeting various people. Guruji Kandasi, when you meet various people, it is not by chance. It is not by coincidence. It has been designed by the Almighty that He has learned something from you and you have learned something from Him, maybe now or in your previous jannams. Then another thing is, my son-in-law was in UK. He had gone on deputation to the Commonwealth to look after global warming of the 54 nations of the world. So he came along with the delegation from the UK to India. And that this moment, the Commonwealth says, this time he will not come. The government of India insisted that he knows his country very well. We suggest that you send him. Oh, Ayaji, it was Saturday in Delhi. The office was closed. So he went to spend some time with the doctor in the Apollo hospital. Jado coffee pee rahe sige, biscuit kha rahe sige, unna da director aa gaya kam vich. The doctor was young. Oh God, he got nervous कि मेरी नौकरी छुट्टी होगी. उनकी किता एकदम prescription लिखती, this test, this test, this test, this test. So my son-in-law told him, मैं सारे टेस्ट करा के आया, this no use. कहता नहीं तू यार हूँ मेरे को आया हैगा. I like to do your सेवा also. उन्हें करा लीजिए और लेबोरेटरी के बंदे चला गया, blood report ले लिया. After 2 days, he rings up my son-in-law कि come, I want to speak to you. There's something wrong with you. Then how can it be wrong? मैं सब कुछ टेस्ट करा के आया. The moment he came, he told him कि जिन्ने भी मैं टेस्ट लिखे सीगे सारे ठीक, पर आर टेस्ट कैंसर था मैं नहीं लिखा सीगा. वो by mistake the technician in the laboratory उन्हें करता and it says there is cancer in the body somewhere. See how that mistake was made. फिर I spoke to Dr. Pandav of the AIMS. वो भी गुरुजी बड़ा जब भगत लगा. वो कहता तू आजकल ता मेरा साडा सर्जन ता बाहर गया छुट्टी ते हैगा. But there's Shashi Behel from the Sloan Keating Cancer Research Institute, United States. He happens to be here today. And he's a friend of his. कहता मैं तेरी गल करा देना. वो the mood बना तो थे ऑपरेशन करवा देंगे. Let's try it. He spoke to him and he sent his son-in-law must come here next day.
He examined him. He says, there is no way out. He has to be operated upon. रुपया 5 लाख जमा करा दो Fortis Hospital ਦੇ ਵਿੱਚ, and I will carry out his operation. On next day, I was told by the hospital that he need not come. The doctor has gone on some duty to Bombay. When he returns, we'll let you know. Guruji ने मैंने एक फ्लैट दिलवाया से सतवाड़ी, which is next to बड़ा मंदिर. So we used to stay over there. और कुछ नहीं, हर शाम में उसी आ जाते सीगे, माथा टेक जाते सीगे. My son-in-law was there. So one day we came over there, and I was a little sad and sitting over there. I said in my mind, Guruji, today I require you in a physical form, and you are not here. Guruji man intuitively kende, tu kede chakran ch piya ho, tu kede behman ch piya ho, ja mandir de paudiyaan gin. What has counting of the steps to do with the cancer or thyroid of my son-in-law? Anyway, I went and started counting the steps. As you get with the Shivji Dipalmurti, at the moment you get into this mandir, there are 5 steps. And you know what the 5 steps told me? Anger, ego, pride, lust, and greed. These are the things you got to get rid of life. And I could literally hear till today the voice coming into my ears. अंदर गया, गुरुजी में मत्था टेकिया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं हेठां in those days the langar was down below, and there are 13 steps. Those 13 steps, when I was coming down, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ आवाज आई, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा. These are 13 words and 13 steps. जिस तरह से हेठां बैठे, you know, 4 people used to sit together. Yeah, sit together. एक थाली हुंदी सी, तेरा दिता खाना है, तेरा दिता पीना है. Oh, nice. Nothing is mine. It's all yours. It's your grace. लंगर खा के फिर बंदा बाहर जाता हैगा. Again, you got to climb the 9 steps. Or Gurujis, those again I could hear. 9 दरवाजे बंद कर, 10 मान दरवाजा खुल जाएगा. And what are those 9 doors? Those 5 evils, they enter your body through the 9 openings in your body. 2 akh, 2 nak, 1 kan, and 2 down below. They are the 9 openings. 9 darwaze band kar, 10वां दरवाजा खुल जाएगा. And what is that 10वां दरवाजा? जो मांगे ठाकुर से सोही सोही. This is the philosophy of our Guru. Guruji never used to speak. He used to convey his messages through his Shabd Kirtan. और जेड़े मंदिर दियां मार्बल दियां पत्थर लगे हुए हैगे, if those stones can speak the philosophy of my Guru, ते जिन्हें एक मंदिर बनाया हैगा वो कत्थे पहुंचा होना, कत्थे पहुंचा होना. Doesn't this prove to you that he's God? These are small little examples of life that must hit you. There is a Rabb. It is within us as to how our relationship with him. Guru mere sang करना है. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, शिव जी की मूर्ति है, believe it,
My son-in-law asks my wife, Mama, I see the eyes moving, I see the lips moving and smiling. My wife says, yes, you're right. She looks at me as I'm seeing the same thing. And in the meantime, बहुत संगत बाहर अंदर अंदर आ गई, कैमरे खोले, वीडियोस लिए ले लिए, and this particular photo of Shivji, eyes opening, mouth opening, is on the internet today. Although मैं कैसे गुरुजी, today I require a physical presence and you're not here. गुरुजी ने अपनी अखां, शिवजी ने अखां खोलियां, मुंह खोलिया. It was a feeling to me and my son-in-law कि गुरु मेरे संग करना. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ एक शशि बैल came and कहते 5 लाख जमा कराओ. happens to Saturday बैंक बंद, मेरी जेब 3 लाख रुपया पिया सीगा. Same evening my daughter's friend came, कहते 5 लाख. कत्थों ਨੂੰ पता लगे कि 5 लाख की मैंने लोड़ है ते कत्थों ही आई गया. So my daughter refused, कहती we will wait for the operation. I said, I'm glad you refused. ਜੇ ਤਾਂ white money ਹੁੰਦੀ ਤੇ son-in-law ਦਾ operation successful ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਜੇ ਉਹ black money ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ operation ਸੀਗਾ, it would not have been successful. So it is so nice, I mean, so nice of my daughter that she did not accept. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, but huge money was spent. The boy is very good, the girl is very good. 3 ਸਾਲ ठीक तरह marriage चलती है. चौथे साल that marriage, that love between husband and wife starts dwindling and a stage comes when they both separate. क्यों? कि उत्थे काला धन लग गया. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਡਿੰਗਸ ਦਿਖਾਈ, ਬਹੁਤ. And at times I noticed that ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ. Then I asked somebody, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੇ ਹੈ. That is what I learned. एकदम मैंने मेरे फादर याद आ गए. कहते बेटा, you have become an officer, be honest. Your honesty is your investment. Your investment in the karma. Karma which itano tera ko jana हैगा, karma which is and God love. Being in the army, had a lovely life. Seen a number of wars. कोई गोली नहीं लगी. जिंदे विंदे with both the arms, both the legs, घर वापस आ गई with my children to enjoy the other half of my life. एक गुरु जी की कृपा है. Then again what happened, once I was sitting with Guruji, the Guruji मैनू कहंदे रखड़ी वाले दिन नहीं, रखड़ी 2 दिन पहला तू 22 सेक्टर दी रेल मार्केट जाई. There's a boy, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ रखड़ियां बेचदा. मैं कहा गुरु जी के नाम तेनों अपना भी पता लग जाओ कौन मुंडा है. 2 days before the Rakhi, I went to him. जगह जगह रेडियां लगी हुई सी, but at one particular radio I saw the photograph of a girl. मैं देखी, मैं कहा this must be the boy. I could just peep in through the girls and the ladies. Being a gent, I couldn't really force my way through. So ultimately मैं कहा गुरु ने मैंने किया तू मिलना हैगा ते मैं कुड़ियां नूं खब्बे सजे थोड़े करके मैं नहीं जान.
I said, but why ਉੱਥੇ ਵੀ there's so many reads ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਵ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। This was the destiny that Guruji wanted to give me. ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ so many years back I had a tumor in my brain and I had lost my eyesight. The tumor was removed, the eyesight came back, and for a year I was perfectly all right. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਿਊਮਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। This time I was lying like a vegetable in the PGI hospital for 2 months. ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੂਨ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ ਪਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ, ਸੋ ਯੂ ਬੈਟਰ ਟੇਕ ਹਿਮ ਟੂ ਯਰ ਹਾਊਸ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ the lady's husband was a peon in the Punjab and Haryana High Court. ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੌਣ ਵੇਲੇ 10 ਮੂੰਗਫੜੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸ ਦਿਆ ਕਰ और दाने कला दिया कर और छिलके अख दे लगा देकर, और एक 10 दिन करने में। When he was still in coma in his house, और माँ ने दिल को 10 मूंगफली बड़े लगाए। He came back to life from coma. After a few weeks, he again went to the hospital to tell the doctor, I'm perfectly all right. And how can you be right? Again, they carried out the MRI of his brain. There was koi naam nishan. It was like if a knife has been passed through a butter. Tumor removed and was perfectly all right. एक कौन कर सकता? तुसी मैनू आप दसो, तुसी सब सुन रहे हो मेरे? एक गुरु ही कर सकता, एक गुरु कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। My sister, she's a doctor in Satsang hospital, allergic to namak, mirch, masale, all foods except boiled vegetables, allergic to wheat, rice, everything. Good enough. वो भी गुरु जी दी बहुत भगत। her son who was studying in Kharagpur IIT कर रहे थे, छुट्टी आया ते बुखार हो गया, बुखार उतर गया। जब उन्होंने बुखार टेस्ट कराता, he was diagnosed with leukemia, blood cancer. Being a doctor, she knows what blood cancer is. She was a doctor, eye specialist in Satsang Hospital, Delhi, of course retired now, and 7 दिन ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਿੱਤੀ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੇ ਚ ਮਾਰਤੀ ਚੌਂਕੜੀ, ਗੋਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, and Guru Nanak ਛੁੱਟ ਗਿਆ। She did not tell the key, she told them this is the problem, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। and ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ
4-5 दिन के बाद resident doctor came. He said, "Ma'am, you're so sad, you know." He said, "This thing was happened to my son." He said, "Me, आजकल laboratory में झूठ बोलते हैं, ये पैसा कमाने वास्ते." Next, he got the blood slides, took the blood off from his son, sent it to Tata Memorial, Bombay, various hospital where it was carried out. They said this, he is perfectly all right. There is no trace of leukemia at all. मैं उसी शाम ਨੂੰ मैं फिर गुरु जी को आया, मैं मत्था टेकिया गुरु जी ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, खुश है ना? मैं कहा हाँ जी गुरु जी खुश है। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ? मैं कहा हाँ। मैं ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ठीक करती है? मैं कहा हाँ गुरु जी बिल्कुल ठीक। ये कौन कर सकता विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी रेडिएशन, a matter of 4-5 days। जब मेरी भैन ने गुरु जी की मनन लगी पर मंगया नहीं, and this thing happened। गुरु जी कहते होंगे सीगे मेरे तो मंगया ना करो, मैनू मन्या करो। क्यों? जब तुसी मंगते हो then it is to is business। मैं तेरा पाठ किया तो मैंने पाठ दिया। नो नो, वो तो जे तुसी ऐ करोगे थोड़ी बड़ी हुई चीज भी खराब हो जाती। And this reminds me when I met Guruji for the first time। He was very happy। मेरी चंगा मेरा गल्ला गुना कर रही थी। मेरी वाइफ कहती आ हम गुरुजी दस चीज ने वेरी गुड मूड। जिस तरह मैं गुरुजी को गई उन्होंने चरण में दबाने लग्या, बिलीव इट, ये 10 चीज़ां मैं जड़ियां मंगनियां सीगियां मैं भुल ही गया। That was the biggest miracle which has happened in my life, and that's why I would say it was the beginning of my journey। उसके बाद सब कुछ ही मिला गया, सब कुछ मिल गया, मंगिया कुछ भी नहीं, मंगिया कुछ भी नहीं। So I mean, ever since I retired and met my guru, life felt nice। That here I come across a human being who's really a God। और गुरु जी तब even without you knowing कई भी होंगे सी कि गुरु जी कोले एक दिन ची खट लेंदे सी। गुरु जी कहते मेरे ऊपर दिल आ गया। एक दिन एम्पायर स्टेट असीं बैठे सीगे। I hope I'm not taking too long। I hope I'm taking। Please continue, please, please। Because गुरु जी मैनू कहते होंगे सी in short, in short, in short। और जब मैं खत्म करता से गुरु जी कहते हूँ आ भी दस दे, हूँ आ भी दस दे, आ भी दस दे। So being from the army, when I started earlier my satsangs, I used to speak mostly in English। तो गुरु जी कहते तू अंग्रेजी सत्संग का कि तू सत्संग का स्वाद खुद ही ले रहा है, ये तेरे सामने लोग बैठे इन्होंने भी स्वाद दे। Then I started speaking in English, Hindi and Punjabi। As मैं to begin with थोड़े मुश्किल लगे, but then Guruji had told me about it। And you know, in life, lot of problems will come to you। Any problem that comes to you, be happy, because all this has come from the divine। And the moment you feel happy and accept willingly, the passage of time, your problems will be over। They will be over। मैं एम्पायर स्टेट बैठा सीगा ते मिस्टर व्हाट इज नेम इज चोपड़ा शर्मा, वो गुरु जी दे राइट लेग दबा रहे सी चरण ते गुरु जी नु कहंदा गुरु जी कदे कदे मैं मेरे सामने काली बिल्ली भी मैनू क्रॉस करना चाहती है। कहंदे जी साडे समाज दे विच काली बिल्ली क्रॉस कर जाए ना कोई बुरी दुर्घटना होने वाली हुंदी है। गुरु जी कहंदे शर्मा तू क्यों है बहमा च पिया होया, जे तेनू तू बलीव भी करदा तू वाहिगुरु कह दिया कर, हरिओम कह दिया कर, तेरा हरिओम बड़ा कि तेरी काली बिल्ली बड़ी। फिर कहंदे गुरु जी कदे कदे मेरी अख भी फड़कन लग जाती हैगी, ये गल ठीक नहीं है। He is asking this question to Guruji। Guruji had also called me and I was pressing his left leg।
मैंने थोड़ा ठुड्डा जा मार के टू ड्रॉ माई अटेंशन, ही लुक्स एट मी, इसे तेरी अख फड़क दिया था, तू रब दा शुक्र कर, तू रब दा शुक्र कर, तेरी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਫੜਕਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਤਾ, और तेरी बीमारी look at it, look at it. He attentively sort of ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ. Few days after that I had a tachycardia, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ, and ultimately I came to Delhi Batra hospital. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ तेरा ऑपरेशन करना है कि मैं करूँ. So before I was to be admitted into the hospital, मैं गुरु जी को चला गया, बड़े इंपायर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ आई वेंट इट ला लिया, फिर भी ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ. मैं I must take his blessings before I get admitted next morning. This man comes out to me and tells me, who's Kantur Asilius? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ nothing is wrong with your heart. ਮੈਂ ਕਿਹਾ feel my pulse is still 180 beats per minute, and you said nothing is wrong with my heart. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ. After some 15-20 minutes ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਜ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ. and that day very big samosas, and ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਘਿਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, and the size of the samosas were also very. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ. ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਸਮੋਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ. I say my God, मैं क्या गुरु जी ने मेरा माइंड रीड कर दिया. सो 4-5 बंदे गए, उन्हें मत्था टेकना, and no प्रसाद, nothing was all. I say how lucky I am. I am so lucky कि गुरु जी दी ब्लेसिंग्स भी हो जाएगी और समोसे भी मैं नहीं खाऊंगा. जिस तरह गुरु जी ने मैं मत्था टेकिया, जैसे उठा, 5 समोसे हवा चो लैके मैंने दे दे. मैं बड़े मुश्किल नाल खाने, बहुत मुश्किल नाल खाधे. जद मैं लेके बैठा, फिर 10 मिनट के बाद गुरु जी फिर मैंने बुलाते, 2 समोसे हवा च कट के फिर मैं देती. पूरी संगत देख रही है. मैं क्या हूं जी खाऊंगा ते उल्टी आएगी. माई सिस्टर इन लॉ पानी का गिलास है तू दे तू खा. गुरु जी कहते सीगे जेड़ा मेरा प्रसाद जेड़ा मंदिर च खाएगा वो है दवाई, जेड़ा घर जाके खाएगा वो है मिठाई. कहना पैम मेरे विच, मैं कि कुछ भी हो उल्टी करना अपने वटे दीज गुरु जी हुक्म. मैं 2 समोसे और खा गया. दिल कच्चा, हाँ बाकी बाहर निकल के कमरे थे, लेकिन किसा वोमिट है, मैं वोमिट आउटसाइड. जिस तरह 12 12:30 बजे कहते अंकल की हालत तेरा हूं. You know, feeling my pulse all the time was my hobby. जिस तरह पल्स चलती सी, मैं वाहिगुरु कहता था. As you feel the pulse, you say वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु. इससे काउंटिंग 180 होगी, 122 काउंटिंग होगी. Because I just came to my mind कि जिस तरह पल्स बढ़ती है तो मैं वाहिगुरु दा नाम विच हरिओम दा नाम पाना, so that the entire praise resonate into the blood of God. अगले दिन गया जी अस्पताल. हाँ गुरु जी कहते तू अस्पताल में जाएंगे. हाँ 12 को कहने की हाल है. मैं कहीं मेरी पल्स तो 80 होगी. कहना झूठ बोल दो. मैं कहनी जी मुझे 80 होगी. वो कल अस्पताल जाएगा. मैं क्या गुरु जी जिस तरह थोड़ा होगा, तू फौजी है का, तू शक्ति है का, तू जाएगा. मैं कह नहीं गुरु जी जिस तरह तुझी को मैं नहीं आता. चल तू जाया, दर्द तसल्ली कर. मैं नेक्स्ट डे आई वेंट, द डॉक्टर एग्जामिन्ड मी, and
he took my BP, पता नहीं, he said change the BP machine. वो ले आया जी, BP दोबारा ली, कहते now I will have to carry out your TMT test the very same day. TMT test कितना जी उन्हें, I was almost out for some time on the TMT, उन्हें बंद करती मैं की गया, everything all right. तो कहते ये तो डॉक्टर साहब ही बताओ, शक पाता ना टेक्नीशियन में। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर मेरी हुई echo. That was not that day, that was the next day. वो मैं थोड़ी तसल्ली आ गई, I'm not that serious. जब उन्हें echo की, मैं टेबल पे पै गया, तारा लगातियां, echo शुरू हो गया, टेक्नीशियन नहीं कर रहा सही कहा। In the meantime 4 doctors, junior doctors, चिट्टे कोट पाके मेरे टेबल पे ला के सही कर गए। मैं कहा मामला गड़बड़, अदरवाइज जो चंगा हार्ट ਹੁੰਦਾ ਹੂਸ਼ੋਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਗੜਬੜ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਫੜਕਣ ਲੱਗੀ। at that moment ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੜਕਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, because I used to also believe in these things. That very split of a second I could see myself and recapitulate me and Mr. Sharma sitting in front of Guruji। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਰਨ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ और शर्मा पूछता क्या फड़क दी है कि गुरु जी मेरे बात देख के कहते तू रब दा शुक्र कर, तू रब दा शुक्र कर। That came to me, that instinct came to me। Why that instinct at that time when you're worried about everything? ये है गुरु जी की कृपा, ये है गुरु जी की कृपा। गुरु मेरे संग हर नाले हर। एक then once I used to go to Guruji very often। once a month मैं जाना ही है। मेरी वाइफ कहती गुरु जी तो जिस दिन जाने गुरु जी कहते राती रात वापस चलो। और कई दुनिया आती है, कई दिन 4-5 दिन बिठाती रहती है। मैं कह दे मस्ट बी सम वेज ऑफ गुरु जी, व्हाई शुड यू वरी अबाउट दिस। कहते नहीं इन्नी दूरों आए हैं, फिर एकदम ही गुरु जी भेज देंगे। एक दफा आए, एक दिन हो गए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन गुरु जी ने भेजिया ही नहीं। मैं गुरु जी को जब मैं आ गया कहते ना कल आ जाए, फिर जान 2 दिन। मैं गुरु जी आ गया हो काफी देर हुई, वो तो रिटायर हुआ है, कल दे रखे आ गए। देन वन डे माय वाइफ से कि मैं आज गुरु जी ने कहते गुरु जी थोड़ी आ गया हो तो कर जाइए। आंटी तो की कहती सी, वो की दिल च गल रखी हुई सी कि गुरु सन हमेशा वापस भेज देंदा है। सुनी मेरी गल ऐ नहीं, फिर खुश होया करके गुरु जी को ले। Good enough. How did he know my wife? Then ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। फिर एक lady was pressing Guruji's leg in the Empire State and गदा कर के गुरु जी को रो भी रही सी। she was crying। आके मेरे कोले आके बैठ गई, a very sophisticated and a smart lady। मेरे रोन लगी। मैं क्या आंटी आप चंगी जगह बैठे, ये रोन खुशी का मौका है, रोन तक आ। मैं करा कि मेरा हस्बैंड इज इन अ वेरी बिग फर्म, लॉट ऑफ मनी, आई गॉट एवरीथिंग, पर मेरी कुड़ी दी लव मैरिज हो गई सी, डाइवोर्स। मेरे मुंडे दी लव मैरिज हो गई, वो भी डाइवोर्स। कहते मेरे मुंडे ने की तो कुड़ी ने करती, इधर कहती मेरी कुड़ी ने की तो मेरे मुंडे ने करती, डाइवोर्स। व्हाट लाइफ इज फॉर मी। गुरु जी मैंने पूछते तू पाठ भगती करती है? कहती हाँ। गुरु जी कहते तू पाठ भगती करती तो है ना, पर तेरी भगती तेनू लग नहीं रही। That's the first time I came to know if do puja पाठ as a ritual नहीं लगनी, ये तो जोत मिला के वो है भक्ति। As a matter of fact, when you start your bhakti कि मैं हम पाठ करना है, the moment you say the word मैं, वो पाठ तुम लगना नहीं कि जिथे तू है तो मैं नहीं है, जिथे मैं तो तू। Understand all this?
These are quite, these things are not told, not to be said. They're supposed to be within you. As a matter of fact, जैसे पाठ शुरू करने मैं पाठ करना, yes, ये ठीक है. But a stage comes when it should become a part of your system. वो तो फिर नहीं करने में पाठ, अपने आप ही वो पाठ अंदर आना चाहिए. जब वो नेचुरल चीज बन जाती है ना, then become a part and it becomes a part of your system. Like the heart is beating, you do not know it's beating. The kidney is functioning, you do not know the kidney is functioning. Similarly, जब पाठ पूजा करना है, shouldn't be मैं पाठ करे हुए पूजा. As a matter of fact, when you're going from one place to another in the car, यही सोचो कि जड़ी मैं मेरी अगे कार जा रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा गुरु बैठेगा और मैं पीछे पीछे जा रहे हैं. So that your journey is, the time spent on a journey is not wasted. Similarly, at night when you're going to sleep, keep on saying the word. Don't say कि मैं 11 बज के सोनी है, मैं लाइट ऑफ करनी है, मैं कल सवेरे जाना. Forget it. Just ना तुसी लाइट ऑफ कीतियां. Keep on saying the word mentally. वाहिगुरु वाहिगुरु हरिओम हरिओम. अपने आप ही ਤੁਹਾਨੂੰ नींद आ जाएगी. जब अख होगी बंद, ते जेड़ा तुसी वाहिगुरु किया, हरिओम किया, it will resonate throughout night in your blood and through your body throughout. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ. Understand? Now you must make it a practice कि ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਚਲੋ and keep on saying ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, so that every step that you take forward, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ. A stage comes when you don't have to remember कि मैं वाहिगुरू वाहिगुरू करें हरिओम. Automatically every step that you take forward, the word हरिओम हरिओम अपने आप ही थोड़े जिस्म जाएगा. That is the way of life you got to teach yourself. उन बिना मेहनत कुछ नहीं, संगत बिना मेहनत कुछ नहीं. It is on that day when I came to know कि अरदास दे विच कितनी भक्ति है. इन्नी भक्ति 20-25 साल मिली, कुछ नहीं मिला. मैं आ कीता, मैं उठे गया, मैं आ कीता, मैं आ मंदिर गया, मैं गुरुद्वारे गया, आ कर मैं ही करता रह गया, मैं करते रह, कुछ नहीं मिला. जब मैं कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सब कुछ मिलने लग गया, सब automatic. So we must keep these things in mind. I know I have taken a very long time of yours. I felt so nice. मेरे घर सत्संग ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, दुनिया आਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. And aim is to ensure that everybody listens to the satsang. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ न्यू ईयर डे के अंदर गुरु जी बहुत सत्संग ਹੁੰਦਾ. Why? When everybody is busy, why on a new year day की गुरु जी भी सत्संग करती है? एम इसकी नॉर्मली सत्संग ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲਵਾਂ ਜਾਈਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਂਸ ਕਰੀਦਾ, ਵਿਸਕੀ ਪੀਦੀ ਹੈ. ਆਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ. ਯੂ نو you start criticizing on a new year day कि साल भी तुसी ऐसे कम उल्टे पुल्टे करके सोचे. So the moment you are with your guru and you're doing your own satsang, you are in different world. You're in that positive world of yours. And like you're all listening to me, I am also enjoying what I'm talking. जैसे गुरु जी कहते सी कि तू अपनी संगत करके अंग्रेजी आप ही स्वाद ले रहा, पर आज मैं इंग्लिश भी बोलिया, हिंदी च भी बोलिया, and पंजाबी च भी बोलिया. And remember, Guru मेरी संग करना है. Listen to him. You'll get those messages. Like I got those messages on the steps. So would you. But you got to keep yourself Guru ਨਾਲ, Guru ਨਾਲ. तो ਜਦੋਂ दुख तकलीफ आए, गुरु शुक्र है तेरा, शुक्र कर. That is, और गुरु जी कहते सीगे, थोड़े कर्म दो किस्म, there are two types where you can erase your bad karmas. One is by doing bhakti, and second is accepting God's will, good or bad.
you're in with him. ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ। when my son lost his hearing, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿ ਉਹੀ hearing ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। And 4 months after that he got his 100% hearing back. So ਅਰਦਾਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖ ਲਿਆ। The proof of pudding lies in eating. Okay? And coming to satsang, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, don't leave that opportunity. It's a gift from the Almighty. ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ CD ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। Where one Maharaja, where Guru Arjan Dev used to go for a ride in the countryside. And ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ countryside, both met together. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ में मैं पिंड में देख लिया कि उते मर रहा, मेरी खानदान भी जा रहा है, मेरा खत्म भी जा रहा है, कोई भक्ति कोई फायदा नहीं, कोई पाठ। गुरु अर्जन देव कल मेरे पीछे पीछे चल, जिथे मेरा घोड़ा जाता तू भी चल। After about 10-15 minutes they came across a village, a चौंपड़ी। तो महाराज कहता गुरु जी this is the dream I got, this is the same hut I got in my dream. ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਜੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। The fact that you do satsang, did satsang and you saw this in your dreams, that chapter is over. A new beginning for your goodness has started. ये सत्संग जानता सीगा, हर सत्संग थोड़ी कोई ना कोई विदाउट यू नोइंग, कोई बीमारी, कोई फाइनेंस प्रॉब्लम, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गए। एंड इन द एंड आई वुड से मेरे बड़े नशे सीखे, सारे नशे छड़ते, गुरु दी चरना जी दा मौज, सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, स्वाद। And in the end I would say Guru di Charna de vich Anand, Anand. And finally I would say that if there's any heaven on this earth, it's but here. फिर गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। एंड गुरु जी को शुक्राना करते हुए, संगत जी आप सबको शुक्राना करते हुए आज्ञा लेते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे गुरु जी की कृपा से। सभी को जय गुरु जी। एंड करते हैं।